Hello everyone, how are you my friends? Welcome to Dream Orientation. Today in this video, I'll make you familiar with the new list of cue cards from September to December 2021. Not only this, I'll also provide some suggestions which would work as alternative questions and unique ideas in order to frame a story. So let's get started. The first cue card of our list is describe a time you got up early. Means आपको एक time बताना है जब आप morning time जल्दी उठे थे. So the first idea of this, you can talk about any family function or on occasion of going to a long journey or a time of any exam or assignment preparation. The second cue card of our list is describe an art or craft activity, for example painting, woodwork, etc. that you had at school. See guys, this cue card we already have on the list, but still I'll provide you some ideas. The first is sketch art. Sketch art means कोई sketch बनाना. Wall hangings means दीवार पर लटकाने वाले कोई भी artistic objects. Candle art means candles को decorate करना. Weaving means कपड़े की बुनाई. Carving means लकड़ की खुदाई, लकड़ पर some designer sculptures बनाना और any text write करना. Pottery means मिट्टी के बर्तन बनाना. The third cue card is describe a person who solves a problem in a smart way. Means for this cue card you have to talk about any problem solver. For this you can talk about any personality whom you are very close, like any of your family member, your friend, any teacher of yours or any favorite celebrity of yours whom you follow very closely. Then the fourth cue card is describe an exciting book that you enjoy reading. For this you can talk about any biography, means jeevani of any person, any novel, any skill-based book. Skill-based book means language learning, can be cooking, dancing, driving, means anything, any of the book. Then any motivational book, means in which book there are some positive thoughts, any story book, and any psychological book. Then fifth cue card is describe a cafe you like to visit. So you can talk about any of the cafe in this. Either you have nearby your home, or you can talk any of the famous cafe like Indian Coffee House, Starbucks Coffee Company or Costa Coffee. Any kind of cafe can be. The sixth cue card is describe a plan in your life that is not related to work or study. This is also, I think, we have in the list already. Still, there are some ideas. First is an overseas or worldwide trip. Second, permanent stay in abroad. Third, buying any car or any luxury item. And fourth idea is pursuing any hobby or skill learning like painting, singing, dancing, language learning. The last idea is for that time when we are very busy in our schedule. For example, we are pursuing our studies or any profession we are having, so we don't have time to pursue our hobby. So this is the kind of idea we can talk about whenever in the future we will have some time. The seventh cue card is talk about an article which you have read about health. This is also we have on the list already. And eighth cue card is describe a time you were friendly to someone you didn't like. Means आपको एक time बताना है, आप एक ऐसे person के साथ friendly हुए, आपने उसके साथ friendly behave किया जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे. So you can talk about you helped any selfish person. See guys, for this cue card I have provided some of the alternative questions so that it would be very helpful for you to talk about such kind of cue card. Means you can talk about any of the selfish person जिसकी आपने help की एक time, or you became friend with a person who believes in individualism. Individualism means अपने आप में जो विश्वास रखता हो, सिर्फ अपने लिए करना, सिर्फ मैं ही हूँ दुनिया में, हर चीज़ में मैं. So इसका मतलब है कि आप एक ऐसे person के साथ आपने उसे अपना friend बनाया जो हमेशा अपने आप में ही believe करता था. So our next ideas are you offered your help a person you are not having understanding with. Means आपने एक ऐसे person को अपनी help offer की जो जिसके साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी. Next idea you can say once you build up your friendship with a quarrelsome person. Means आप एक ऐसे person के बारे में बता सकते हो, आपने एक ऐसे person से friendship की जो बड़ा झगड़ालू था.
Okay, then next idea is you inculcate positivity in a person having negative mindset. Means आपने एक ऐसे पर्सन में पॉजिटिव थॉट्स उसे पॉजिटिव बनाया, उसमें पॉजिटिव थॉट्स डाले जो हमेशा नेगेटिव रहता था, हमेशा नेगेटिविटी में ही सोचता था, नेगेटिविटी में ही करता था. So see guys, for this cue card you can consider such kind of situations all around your life so that you can talk about such a person. Means all these kind of person, I don't think that you like such people in your life, so you can easily talk about such people so that it will be very easy for you to make a story. Next cue card of our list is describe a time you bought something from a street or outdoor market. मीन्स आपने कुछ परचेज किया स्ट्रीट मार्केट से, आउटडोर मार्केट से. ये तो कुछ भी हो सकता है, आइदर कैन बी योर सेल्फ और फॉर एनी ऑफ योर फ्रेंड और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर. सो यू कैन टॉक अबाउट एनी ब्रांडेड आउटफिट, एनी फुटवेयर, ज्वेलरी आइटम, एनी बुक, any utensil for your kitchen, any toy if you have child at your home, any art piece in order to decorate your home, or either it can be any gift. So next is describe a time when you are waiting for something special that would happen. Means आपको एक टाइम बताना है जब आप समथिंग कुछ स्पेशल होने की वेट कर रहे थे. कि हम कई बार सोचते हैं ना कि मेरी ये विश है, ये कब होगा. समथिंग स्पेशल, हमारी कोई डिज़ायर होती है, हम सोचते हैं कि ये कब होगा, लाइक दैट. सो द आइडियाज़ फॉर दिस यू कैन टॉक अबाउट मीटिंग विद समवन. मीन्स हमारा कभी कभी ड्रीम होता है ना, हम अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हैं, एनी ऑफ आवर सिंगर, एनी ऑफ द एक्टर, any kind of personality, a famous personality. Then you can say any place you have never visited before but dreamed for a long time. Means हमारा कई बार कोई ड्रीम होता है, हम चाइल्डहुड से सोचते हैं कि हम जब एडल्ट हो गए या फिर जब हम फाइनेंशियली स्टेबल हो गए तो हम इस जगह पर पक्का जाएंगे. बिकॉज समटाइम्स ये फाइनेंशियल बजट काफ़ी हैवी होता है इस चीज़ का, तो हम तब अफोर्ड नहीं कर पाते जब हम छोटे थे. तो हम सोचते हैं कि जब हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तो हम पक्का जाएंगे. लाइक दैट काइंड ऑफ विश कैन बी. और एनी जर्नी बाय प्लेन, लाइक सम लोगों का ये ड्रीम होता है ना प्लेन से ट्रैवल करना. और बाइंग एनी लग्जरी कार, एनी ऑफ द कार विच यू हैव ड्रीम्ड अबाउट. और बिल्डिंग अ ड्रीम होम, कई लोगों का ड्रीम होता है कि इस सिटी में अपना ड्रीम होम बनाना है, यहाँ बनाना है, ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, लाइक दैट. और स्टार्टिंग एनी बिजनेस, कई बार हम काफ़ी टाइम से सोचते आ रहे होते हैं कि हमारा ये वाला बिजनेस हो, बट उसमें इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ता है, हम नहीं कर पाते, लेकिन एक दिन हमारी वो डिज़ायर पूरी हो जाती है. सो दीज काइंड ऑफ आइडियाज़ यू कैन टॉक अबाउट them in this cue card. Number 11th cue card is describe a famous athlete you know. See it here. For this cue card, first of all you have to understand the meaning of athlete. Athlete means a sportsman who is expert in sports and any kind of physical exercise. So for this, like you can talk about John Cena as everybody knows him. So he is an American wrestler, or you can say that Cristiano Ronaldo, he is Portuguese footballer. And Lionel Messi, he is Argentine footballer. Or you can talk about LeBron James, he is an American basketball player. So these are some foreigner athletes. So if you have any choice, you can talk about the Indian athletes as well. For example, Virat Kohli, who is Indian cricketer, Sania Mirza, who is lawn tennis player, and Neeraj Chopra, who is track and field athlete, who has recently won a gold medal. So number 11th, it was number 11th. Now number 12th is describe a creative person whose work you admire. Means आपको एक ऐसा person बताना है जो काफ़ी creative है, जो अपने काम में हमेशा creativity लेकर आता है और आप उसके काम की हमेशा तारीफ करते हो. तो for this you can talk about any professional writer. Means writer of anything, can be like songwriter, story writer, means any kind of author, or painter. Professional designer means fashion designer it can be, or interior or exterior designer it can be. Or any artist, any kind of artist like dancer, singer, music composer. Or any architect means जो किसी भी building की layout को design करता है. So any kind of person can be here. And next
डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट डिसीजन दैट यू वंस मेड। आपको एक टाइम बताना है जब आपने एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीज़न लिया था। सो आइडियाज़ फॉर दिस आर कन्फ्यूज़न बिटवीन हैविंग जॉब और लर्निंग एनी स्किल और कंटिन्यूइंग फर्दर स्टडीज़। सी गाइस, हमारी लाइफ में एक ऐसा पीरियड आता है जब हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमें अपनी फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या हमें जॉब करनी चाहिए या फिर हमें कोई और लाइक इंटरेस्ट होता है, हम कोई और स्किल सीखना चाहते हैं, तो हम इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। सो दिस काइंड ऑफ आइडिया कैन बी और सिलेक्शन ऑफ स्कूल और कॉलेज, और इफ़ यू आर गोइंग टू कंटिन्यू योर स्टडीज़ then selection of best school or college, this is seriously a herculean task for everyone. Then figuring out where to live for studies. See guys, sometimes अगर हम अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमें कई बार अपने घर से दूर रहना पड़ता है. So there are some of the people who can't live far away from their home because they have homesickness. So this kind of idea can be if you are one of them. Then starting any business. समटाइम्स हम ये सोचते हैं ना कि ये बिज़नेस स्टार्ट करें या ना करें इन ऑर्डर टू लॉस और प्रॉफिट. हम सोचते हैं कि हमें इसमें लॉस हो गया या प्रॉफिट होगा. सो दैट काइंड ऑफ आइडिया कैन बी, और बाइंग एनी प्रॉपर्टी और हाउस, दिस इज़ ऑल्सो दैट काइंड ऑफ आइडिया ओनली. कई बार हम किसी प्रॉपर्टी और हाउस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम बड़े कन्फ्यूज होते हैं, डाउटफुल होते हैं वेदर इट कैन बी यूजफुल फॉर द फ्यूचर पर्पज और नॉट. Or avoiding fast food. See guys, there are some of the people, I think some of them they are very used to have fast food like on weekdays. Some are there who have fast food on weekend, so they can't avoid fast food in their life. So if you are one of them, you can pick such idea. Then 14th cue card is describe a habit your friend has and you want to develop. मीन्स आपको एक ऐसी आदत बतानी है जो आपकी फ्रेंड की है लेकिन आप भी उसे डेवलप करना चाहते हैं. मीन्स आपको अपने फ्रेंड की कोई ऐसी आदत बड़ी पसंद आती है और आप उसे डेवलप करना चाहते हो कि आप में भी वो आदत आए. सो व्हाट कैन बी आइडियाज़ फॉर दिस? बीइंग रिस्पॉन्सिबल विद मनी. See dear, there are some of the people who are very means who never think twice before investing money on something. सो हम अपनी मनी जब सोच समझ कर किसी भी चीज़ पर इन्वेस्ट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है. तो सपोज़ अगर आपके फ्रेंड के पास ये स्किल है लेकिन आप में नहीं है, आप ये बोल सकते हो. और पेशेंस एंड परसेवरेंस. पेशेंस एंड परसेवरेंस मीन्स आपको आपकी सहनशीलता. कई बार हम ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं ना हर एक चीज़ को लेकर, लेकिन हमारा फ्रेंड जो है बड़ा पेशेंट है इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव वन. यू कैन टॉक अबाउट दिस. और पे ग्रैटिट्यूड टू गॉड और एंड एल्डर्स. इट मीन्स भगवान की प्रेयर करना मॉर्निंग और इवनिंग. सपोज योर फ्रेंड is praying in the morning or as well as in the evening to the Almighty. He is praying to the Almighty, but you are not. So you want to develop this habit in yours also. Then spending time with family and friends. सपोज आपके फ्रेंड का बड़ा हैक्टिक स्केड्यूल है, सिमिलरली आपका भी बड़ा हैक्टिक स्केड्यूल है, और आपका फ्रेंड लेकिन अपनी फैमिली के लिए अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालता है, समहाउ मैनेज करता है, लेकिन यू कांट. सो यू कैन टॉक अबाउट दिस. और न्यूज़पेपर और बुक्स रीडिंग. सी देयर, आई नो सम ऑफ द पीपल who are not having this habit, newspaper reading or books reading, because they find it very boring task. So if your friend is having this habit, that newspaper reading in the morning, then books reading, but you are not having this habit, you can talk about this. Or limiting screen time. See dear, if you are having such habit to watch TV or to use your mobile phone for entertainment purpose, more and more you're using your mobile phone, so you should limit that time. You can talk about this. Or being organized for everything. Suppose you are such kind of person who have mess around you always, all around, so you're not having such kind of organization, so you want to be organized as your friend is. So this is idea. Next, 15th cue card is describe a bicycle, motorcycle, car trip you would like to go on. मीन्स आप किसी बाईसाइकिल ट्रिप पर जाना चाहते हो, किसी मोटरसाइकिल ट्रिप पर या फिर कार ट्रिप पर आप जाना चाहते हो इन द फ्यूचर. सो इन दिस आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू सम ऑफ द यूनिक आइडियाज़.
see dear, car trip. There is nothing, I think, something special. So you should talk about any adventurous activity or any unique kind of task. So you can talk about this bicycle touring for pleasure and adventure. See, जब हम bicycle touring करते हैं तो हमें खुशी तो होती है, लेकिन एक डेयरिंग एक्टिविटी भी हो जाती है, समथिंग एडवेंचरस, समथिंग यूनिक करते हैं हम, आप ये बोल सकते हो. और माउंटेन बाइकिंग मीन्स माउंटेन्स पर बाइकिंग करना, बाइकिंग कॉम्पिटिशन करना, आप ये बोल सकते हो. और मोटरसाइकिल कैंपिंग ट्रिप क्या होता है बच्चे? इट मीन्स आप मोटरसाइकिल टूरिंग करते हो और जब कभी भी आपको कहीं पर रेस्ट करना होता है तो आपका मोटरसाइकिल ही आपको हेल्प करता है कैंप ऑर्गेनाइज करने में, जो कि आपके लिए शेल्टर का काम करता है. और नेक्स्ट आइडिया इज अ फार अवे कार जर्नी विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स. नेक्स्ट 16th क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ प्लेस यू विजिटेड ऑन वेकेशन. मीन्स आपको एक टाइम बताना है जब आप एक ऐसी वेकेशन पर विजिट किया था आपने. So for this you can talk about any kind of place in India or out of India as well, but I have picked up some of the places in India only, like Jaipur, Udaipur, Delhi, Nainital, Shimla, Mussoorie, Manali, Mumbai, Pune, Kerala, Rajasthan, or any kind of religious place. If you are not interested in these kind of things, then you can pick any entertainment park as well. Then 17th क्यू कार्ड is describe a good service you received. It means आपने कोई good service receive की, either it can be any shop or from any supermarket. So for this the ideas are any big discount you received, or buy 2 get 1 free offer चल रहा था, or a warm welcome on entry and exit. Some kind of supermarkets are there or even shops are there also who always do the warm welcome of their customers on entry as well as on exit. So that you like the most. And another idea is feel special by showing that know me by my that not know me by my name but by my shopping habits and interest which made a prompt shopping. सी डियर, इस आइडिया का मतलब क्या है कि कभी कभी ना हम इतने कंफ्यूज होते हैं, हम हमारे लिए इंस्टेंट चॉइस नहीं बना पाते, बिकॉज व्हेन वी गो टू द सुपर मार्केट देयर आर मैनी काइंड ऑफ थिंग्स इन द स्टॉक, वी आर अनएबल टू मेक आवर चॉइस in terms of color also, in terms of any design also. So for this any of the supermarket or shop can be जो जिन्होंने आपको एक बेस्ट सर्विस दी, आपकी हैबिट्स को जानते हुए, आपके इंटरेस्ट को जानते हुए, आपकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करके उन्होंने आपको आपकी हेल्प की ताकि आपकी प्रॉम्प्ट और इंस्टेंट शॉपिंग हो सके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो. वो आपको आपके नेम से नहीं जानते थे, लेकिन आपको ऐसा फील हुआ कि आपकी आदतें उन्होंने ऑब्जर्व कर ली और आपके लिए वही स्टॉक आपके लिए चूज़ किया जो आपके लिए परफेक्ट था अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी. सो दिस काइंड ऑफ सर्विस कैन बी. Or a long time research for any product fulfills at particular store. See dear, sometimes ऐसा होता है ना कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की सर्च में होते हैं. हम फॉर एग्जांपल समटाइम्स हम उसे इंटरनेट पर देख लेते हैं कि हमें यही चीज़ चाहिए, लेकिन हमें वो जल्दी मिलती नहीं है. हम बड़ा देखते हैं लेकिन हमें किसी भी स्टोर पर नहीं मिलती. समटाइम्स वी हैव टू चेंज द सिटी ऑल्सो. So this kind of idea can be, or like this research of yours fulfills at a particular store. So this kind of idea can be. And last idea for this, a friendly environment of supermarket or a shop means sometimes उनका environment इतना friendly होता है, हमें लगता है कि ये तो हमें सालों से जानते हैं, मतलब हमें unknown feel ही नहीं होने देते, हमारी hospitality इतनी अच्छे से करते हैं like a friend. So these are the ideas for this cue card. Next is डिस्क्राइब अ बिजनेसमैन यू एडमायर. मीन्स आपको बताना है कोई भी बिजनेसमैन, वर्ल्ड वाइड फेमस बिजनेसमैन, ही और शी कैन बी वर्ल्ड वाइड फेमस और नेशनल बेसिस फेमस. सो यू कैन टॉक अबाउट बिल गेट्स, अ माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर, मार्क जुकरबर्ग, a Facebook founder, Steve Jobs means chairman and co-founder of Apple. Or these are about the foreigners. If you want to talk about Indians, there are some choices as well, like Vijay Shekhar Sharma, founder of India's biggest payment system like Paytm, you can talk about him. Or Mukesh Ambani, chairman and managing director of Reliance Industries. Ratan Tata means chairman of Tata Group. Next, 19th is describe a town or city where you would like to live in the future. Describe a person who you have heard or known that you think is interesting.
This is a 20th. This is any athlete, any businessman, any artist like writer, painter, singer, dancer, and actor you could talk about. Thank you for watching. So, see dear, I hope you like this video. If you have any query or you want to have any kind of story from my ideas, please let me know in the comments. I will definitely help you to make the story. Thanks for watching. Once again, thank you. Have a nice day ahead.